Hello, welcome back once again in my channel, Aliyah Sansas Learning Center. So after a very long time, I came back once again for all of you. Now, I'm going to start with some new concept, new mathematics of degree level, starting with the first chapter, that is Laplace Transform. So hope you must be fine, doing well. So let us start and do some new thing to my channel. Welcome back once again to all of you, all my viewers. I welcome back once all of you. Now let us start with the new journey of degree mathematics, starting with the first chapter, Laplace Transform. So as you can see, I am sharing you the notes. This notes is of my colleague, Mr. Abdul Nadeem, of my same college. The purpose of sharing this note because this note is very well presented, so it will make you very easier for understanding. So starting with the chapter Laplace transform, first let us understand what do you mean by Laplace transform. So basically the Laplace transform is used for converting your time domain into S domain. Now what do you mean by time domain and what do you mean by S domain? As you very well known, time domain is nothing but the graph, the thing which is plotted between time axis versus amplitude. That is known as what time domain representation. Now in this Laplace transform, we are transforming the time domain representation into S domain. Now what do you mean by this S domain? This S domain stands for stability. Basically this stability is used in the control system application में use होता है. So this time domain is used for converting, this Laplace transform is used for converting your time domain into S domain. S stands for stability. So basically the system is stable or unstable. So we require this Laplace transform to understand the system is stable or not. So what is the definition of this Laplace transform? The definition of Laplace transform is nothing but if any system is you are having in a time domain f of t, if you are having a function f of t in time domain, so Laplace transform of f of t is given by its definition integration of 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. So basically this time domain is converted into S domain. So Laplace transform of f of t is nothing but integration of 0 to infinity e raised to minus ft f of t dt. Now there are some formulas. There are some formulas related with Laplace transform which we have to use in our numericals for solving this. So what are the formulas? Let us see, let us understand what are the formulas which we are going to use in our numericals. So Laplace transform of 1 is 1 upon s. Laplace transform of e raised to minus 80 1 upon s plus a. Laplace transform of e raised to 80 1 upon s minus a. Laplace transform of t 1 upon s square. Laplace transform sine of 80. This is a trigonometric function sine of 80 a upon s square plus a square. Laplace transform of cos of 80 s upon s square plus a square. So this is a difference in sine of 80 and cos of 80. In the numerator there is a. A stands for constant. Anything constant which is combined, which is given with the t. So sine of 80 a upon s square plus a square. Cos of 80 s upon s square plus a square. Now Laplace transform of sine of 80 hyperbolic function. Sine of hyperbolic a of t a upon s square minus a square. And similarly for cos of hyperbolic 80 s upon s square minus a square. In the end, the last formula Laplace transform of t raised to n, it is given by two formulas, gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. And similarly Laplace transform of t of raised to the power n is also n factorial upon s raised to the power n plus 1. So these are the formulas which are related with your Laplace transform. You must be know, you must be remember, you must be by heart, and you must be using these formulas only in solving your Laplace transform numericals. Okay, now let us start with the first numerical. Find the Laplace transform of square root of 1 plus sine t. So this is the first numerical given in your notes. Square root of 1 plus sine of t Laplace transform. So basically f of t, the function which is given to you, square root of 1 plus sine t. So we are using the formula of sine 2 theta. In trigonometry, you are having the formula sine 2 theta. Sine 2 theta is equals to 2 sine theta into cos theta. So basically for using this sine t, we are going to use
दिस फॉर्मूला साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्यों करना है? बिकॉज देखो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट करके कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है आपके पास। तो पहले तो आपको ये स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये रिमूव कैसा होगा? जब हम लोग यहाँ पे कोई स्क्वायरिंग वाला फंक्शन लेके आएंगे तब ये स्क्वायर रूट उसका कैंसिल होगा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर करके। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइन टी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टिग्नोमेट्री वाला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर सिर्फ साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसी तरीके से ये साइन टी को हम लोग ने रिप्लेस कर दिए किसके अंदर? 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। और टिग्नोमेट्री में आपको पता होगा, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 की जगह पे साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2 यूज किए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे रिप्लेस किया साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2। और ये साइन टी का यूज किए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 2 sin t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपांशन नजर आएगा, जहाँ पे a आपका क्या होगा? साइन टी बाई 2 और b क्या होगा? आपका कॉस टी बाई 2। तो बेसिकली इट इज एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग ने इसको डायरेक्टली a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। यहाँ पे बाजू में आपका फॉर्मूला मेंशन किया हुआ, इसलिए मैं ये नोट्स आपको शेयर करूँ बिकॉज ये बहुत इजी फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे सब चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस नोट्स। तो साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2 द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो कैंसल, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल। तो फाइनली आपका फंक्शन क्या बन गया? एफ ऑफ टी क्या बन गया? साइन टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 प्लस कॉस टी बाई 2। तो इसीलिए देखो हम लोग ने पहले डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाले थे ये फंक्शन का, इसके लिए पहले ये फंक्शन को मॉडिफाई किए, कुछ इसमें कन्वर्ट किए, जिससे हम लोग लैप्लास का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी बाई 2 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी बाई 2। ना अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ ए टी क्या? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे आपके पास क्या है? 1/2, क्योंकि टी बाई 2 है तो ए की जगह पे क्या होगा? 1/2। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिप्लेस किए ए की जगह पे 1/2 एस स्क्वायर प्लस ए की जगह पे अगेन 1/2 द होल स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ऑफ 80 अगेन ए की जगह पे क्या है? 1/2। तो एस, क्योंकि कॉस ऑफ 80 के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में एस आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर आया एस स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ना अभी आप क्या कर सकते हो? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कॉमन रख दो और डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर दो। So finally, Laplace transform of your given function f of t is equals to 1/2 plus s upon s square plus 1/2 the whole square। चाहे तो आप इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर पे स्क्वायरिंग कर सकते हो, लेकिन आपका फाइनली यहाँ पे आंसर आपका आ गया, आपने फाइनली फॉर्मूला अप्लाई कर लिए। यहाँ तक भी कर दोगे तो दैट्स इट। इसके आगे भी जा सकते हो आप, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिकल को एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग करना है, एडजस्ट करना है, तो इट्स अप टू यू, बट योर आंसर इज कंप्लीटेड TDR। सो आई होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड। मैंने ये एक एग्जांपल लेके आपको स्टार्ट किया है। इसी तरीके से और भी आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी थिंग इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड, please comment me, message me, definitely I will try to explain you once more. Thank you all of you.